सपोर्ट वाली बात है तो उसमें वो फिर आइडेंटिफाई नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात इसमें ये देखने की है कि वी शुड आल्सो इंश्योर दैट हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट व्हिच वी आर प्रिपेयरिंग विल फाइंड एप्लीकेशन, कैसे यूज होगा। तो जो लोग ग्रामीण उनके औरतों के या और लोगों के जिनके लिए ये एप्लीकेबल है, उनके संपर्क में है और उनके साथ रेपो है, वो अगर इसको यूज करेंगे तो उसका प्रयोग भी हो। ये दो बातें मुझे कहनी। इफ दैट इज डन, आई थिंक वी वुड डेफिनेटली वेलकम दिस। एंड सिंस दिस बीइंग द फर्स्ट ऑफ दिस काइंड, वी वुड से कि वी लव टू गो अहेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। थैंक यू सर। तो उसमें क्या चाहते हैं, उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बोल के दोबारा कॉन्सेप्ट में कर रहा है। हाँ, वो आप सोच लें इस पे। जो मैंने दो बात कही हैं उस कॉन्टेक्स्ट में सर क्या वीडियो होगा। सर जो वीडियो है हाँ, वो उनका ब्रॉड व्यू है मेंटल हेल्थ, बट इन ईच वीडियो इट्स वेरी स्पेसिफिक मैसेज। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक में हम बात कर रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के कौन लोग हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, देखिए जी सर, कि जैसे हमने मान लीजिए किसी चीज पे काम किया, बुलेट ड्रिवन ट्रैक्टर पे काम किया, तो एक टेक्नोलॉजी है जिसका वहां पे प्रयोग है, उसमें कुछ कमी है, उसको प्रमोट करके उस टेक्नोलॉजी को वापस हम उधर डिसेमिनेट करना चाहते हैं। जी सर। ठीक इसी रूप में हम इस चीज को भी देखना चाहेंगे कि एक स्पेसिफिक मतलब एक इनपुट है ना। तो अभी जो आपके अलग अलग वीडियो बिल्कुल ठीक है, आपके प्रोग्राम में दे आर मेकिंग दिस थिंग, तो अगर आप ये सजेस्ट कर रही हैं कि भाई इसी प्रोग्राम में रुटाग की कुछ सपोर्ट मिले और ये प्रोग्राम को एक्सटेंड करें। जी सर। अभी तक हम ऐसा नहीं करते रहे हैं और ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है क्योंकि हमारे फंड्स उस रूप में लिमिटेड होते हैं। जी सर। तो अगर एक स्पेसिफिक आइटम है ना, जैसे हमने कहा कि कैन वी हैव अ वीडियो which focuses on, let us say, positive thinking, या whatever, you know, और वो चीज इतनी मतलब इस रेफरेंस में अगर हो तो अच्छी है कि वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली जो मेंटली इल हैं, वो सारी नॉलेज भी जितनी नेसेसरी है वो दी जा सकती है टू द एक्सटेंट इट इज डिजायरेबल, बट समथिंग व्हिच इज वाइडली एप्लीकेबल, है ना। तो मतलब उस तरह का अगर कोई एक वीडियो है तो वो एक तरह से हमारे लिए टेक्नोलॉजी होगी। I think maybe she may have a difficult case. Maybe I am trying to understand what he is trying to say. आप correction कर दीजिए. For example, आप suppose village women का बात कर रहे हैं, understanding about say sleep disorder and associated issues of the wives at the village level. तो उनके लिए 3-4 डिफिकल्टीज क्या क्या होती है और उनके लिए क्या क्या वीडियो आप बना रही है, तो वो वाला फोकस वे में आई थिंक वाला गो डिसीजन फोकस, नॉट दैट बच्चे के लिए भी हो जाए, वुमेन के लिए भी हो जाए, मेन के लिए भी हो जाए। एम आई राइट और यू वांटेड टू से समथिंग? हाँ नहीं, एक पैकेज हो, बस एक पैकेज हो जो एड्रेस कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, है ना। तो और वो यूज कौन करेगा ये समझ में आ जाए, मतलब हमको, हम सभी को, कि ये यूज इस रूप में होगा। अभी जो आपके ये हैं ये कैसे YouTube में डाल देते हैं, वो अपने आप देखेंगे। हाँ जी सर। सर जो मेंटल हेल्थ वाला फर्स्ट सेक्शन है ना, वो तो देखिए मेंटल हेल्थ का मतलब है इट हैज नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दोज फैक्टर्स जो आम आदमी की समझ के लिए जरूरी है, दैट्स इट। और इसमें मैक्सिमम जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, क्लिनिकल नहीं, पर अभी जैसे जो भी प्रोजेक्ट होगा तो एट द एंड ऑफ कंप्लीशन हमको क्या मिलेगा, मतलब व्हाट विल बी द यू नो डिलीवरेबल, हम रुटाग विल हैव व्हाट जी, एक सीरीज ऑफ वीडियोस, नंबर 2 वहाँ की औरतों को, जैसे मैंने कहा कि सेकंड सेक्शन है, उस सेक्शन में हम उन पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ मुद्दों पर उन लोगों से उन औरतों से बात करेंगे जो रिकॉर्डेड होएगा, जिसमें वो अगले लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जैसे अगर हमने ये किया कि आज हमने 2 गांव की औरतें साथ बिठाई ऑनलाइन आजकल तो, और वहां से कोई लाइजन कर रहा है
और हम किसी वो भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हैं, हम उनको साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं इन नॉर्मल सेटिंग। मतलब ऐसा नहीं कि कोई क्लिनिकल या काउंसलिंग सेटिंग है, जो बहुत क्लियर सा मैसेज है, उसको हमने एडिट किया और यहाँ पे हमने वो सीरीज डाल दी। अब जिन औरतों को भी सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है, उन लोगों को ये मैसेज मिला कि अच्छा, ये नींद मुझे यूं नहीं आती कि मेरा दिमाग तो इधर उधर घूमता रहता है ना, मन तो इधर उधर घूमता रहता है, तो मुझे अपने थिंकिंग प्रोसेस को भी शांत करना होगा, मुझे अपनी सोच को शांत करना होगा अगर मुझे सही सोना है तो आप ये देखिए कि एक तरह से नॉलेज ट्रांसलेशन बहुत आसानी से, जब हम कोई भी चीज बोल रहे हैं तो उसके पीछे साइंस है, साइकोलॉजी है, लेकिन जब आप उसे फील्ड में ले जा रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का इतना आसान सॉल्यूशन उनको लगे कि नेक्स्ट डोर लेडी कुछ बता रही है। तो वो सीरीज ऑफ वो रहेंगी वीडियोस, जो मैंने कहा कि फर्स्ट में, क्योंकि हम अभी तक आई थिंक, और यूज जो है उसका वॉलंटरी होगा, वो अपने आप खोल के देखें जी, वो तो फिर वही तो कह रहे हैं सर, जब भी तो वो आएंगी ना, जब उनको पता लगेगा कि अगर आप, मैं इसे क्लोजली देखती हूँ, मतलब हरियाणवी जो जितना भी यूट्यूब है, वो अभी अगर आप देखते हैं तो लगभग 20 से 25 चैनल तो गांव की औरतों ने जनरेट किए हुए हैं, वो गीत डालती हैं वहां पे और औरतें बैठ के सुनती हैं। तो यहाँ क्या है कि मेंटल हेल्थ पे अभी उनके पास कुछ नहीं है, और मेरे कम से कम 10-12 पेपर हैं हर मुद्दे को उठाते हुए। तो नहीं सर, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ ये समझ आ रहा है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप अवेयरनेस के थ्रू दूर हो सकती हैं, जो अवेयरनेस अभी क्रिएट नहीं की गई है। हम लोग भी, अब तक मैं भी जाती थी, मैं अपना डेटा लाती थी, रिसर्च लिखती थी और पब्लिश कर देती थी, वो तो है वो ना, बात बिल्कुल समझ में तो उसमें क्या है कि उनको मुड़ के तो कोई भी हेल्प नहीं कर रहा ना। तो जब उनको ये समझ आएगा कि भाई ऐसी ऐसी बातें हुई हैं और उसमें ऐसा बताया गया है, तो वो कनेक्शन जुड़ेंगे। तो इट विल वर्क ऑन 2 मोड, 1 क्रिएटिंग मोर वीडियोस, क्योंकि ये हमने अभी इनिशिएट किया ड्यूरिंग कोविड-19, और दूसरा है उन पे बात करना, जो उनको इंटरेक्ट करना, क्योंकि हमें वहां से प्रॉब्लम भी तो चाहिए, हम वन वे चैनल नहीं रख सकते ना लंबे टाइम के लिए। वो बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे जैसे। ठीक है जी, लास्टली वो जो आपने भी बताया और मैडम केतकी ने भी बताया जी, कि वो मानसिक स्वास्थ्य पे जो अलग से एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जी तो उसके अंतर्गत फिर सर, वो उनका बहुत अपना अलग एजेंडा है, वो बिल्कुल अलग है। वहां तो अलग रखे हैं, हाँ, लेकिन मतलब एज ए थर्ड पर्सन मुझे लगता है कि ये चीज जो है उसमें फिट होती है। नहीं होएगी सर, तो अगर उसमें फिट होती है तो वो ये होगी, ये फिट हो सकती है, आप उसी तरह से बनाएं। हाँ, ताकि नहीं वो नहीं है, वो अलग, बिल्कुल अलग है उनका। ऐसे तो देखिए ऐसा है, क्योंकि अगर ये तो अलग ही जी, मतलब अगर इस बात को ऐसे भी बोले तो आप देखिए कि मेंटल हेल्थ पे तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्स आर अवेलेबल। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये इतनी सारी एप्स ऑलरेडी पड़ी, ये क्यों नहीं यूज कर लेंगी जिन औरतों को। यहाँ उनके साथ इंटरेक्शन, उनका एक तरह से कनेक्शन देना उनको, और उनकी समझ के साथ लोकेलिटी पे जाना, वो बहुत जरूरी है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा जो अभी आपने बोला, वो मेरा आशय नहीं था। मेरा आशय था कि ये वाला काम, वो प्लेटफॉर्म डायरेक्टली वो तो है ही। सर एक कोई प्रोजेक्ट सबमिट करा गया है और उसको फंड किया गया है। नहीं, वो तो इसकी बाबत में भी जवाब दे सकती है मैम, आप आए तो जवाब दे दीजिए। हाँ, मैंने पहले ही जवाब दे दिया है और इसी तहत ही हमने बोला है, कुछ सोच के ही बोला है। आप ये बनाते रहे, वी विल गाइड यू, ये हाउ इट विल फिट एंड दैट वी विल टेक इट, ये हो जाएगा। वी विल ट्राई टू पुट इट दैट वे। वो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम को म्यूट को हटाओ। हेलो, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं ना कि हमको रुटाक के द्वारा, राइटली शब्द यूज कर रहा हूँ, ये ब्रेन वॉश किया गया है, ब्रेन वॉश इन द राइट सेंस, कि ये डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, ये ऑलरेडी एप्लीकेशन में होना चाहिए, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी यूज हो, है ना। उस संदर्भ में आप इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, आप उसमें केवल माइनर इंटरवेंशन करेंगे, फिर उस टेक्नोलॉजी को वापस में डालेंगे। ये बात हमको हैमर करी जाती है बार बार।
उसलिए हम उस बात के से इस बात को देख रहे हैं। अदरवाइज तो इसका मतलब यूटिलिटी पे क्वेश्चन तो हो ही नहीं सर, अगर मैं आपकी ही भाषा में बोलूं साइकोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये ऐसे हुआ कि पहले हम सारा क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम उनके पास जा रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं तुम्हें और क्या चाहिए, उस अकॉर्डिंग उसको हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। Ma'am wanted to say something, Dr. Bapat? No, I think I have another meeting. Maybe we can take up something and we can discuss offline more. Because even though Dr. I admire her efforts, but for this RUTAC project, we have to take different approaches. She has initiated some good work, but for this and that demand driven, let this webinar and other demands can come first, and accordingly we can. Thanks. मैम दोबारा बता दीजिए मैम, सॉरी। नहीं, ये जो है इनका मैं अप्रोच को, आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ। यस। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि डॉक्टर कमलेश ने ये अच्छे से इनिशिएट किया है, उनके प्रयास को मैं दाद देती हूँ, परंतु ये रूटा के तहत जो प्रोजेक्ट बन रहा है, लेट अस गो थोड़ा सा डिफरेंटली, लेट पहले डिमांड्स थोड़ा सा दूसरे जो सेक्टर में जो डॉक्टर कमलेश कह रहे थे उस तरह से ये कर दे कि कौन से मॉड्यूल्स को वो ज्यादा प्राधान्यता देना चाहते हैं, लेट अस गेट इट थ्रू दिस डिमांड एंड अकॉर्डिंगली वो बनाने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So I would say कि the select sectors can come maybe from Haryana or from wherever some 2-3 places पे, जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें, बिल्कुल सही है, वो नहीं है लेडीज के लिए या किसी के भी लिए, and it is not only for ladies, for any people for that matter, no gender thing can come, but we can select and I think we can discuss offline because बहुत देर से other people are also waiting. So let us I will stop here and हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, बाद में भी उसको स्ट्रेंथन करते रहेंगे, बट ये अच्छा प्रयास है। ओवर। Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. चलो, I think maybe quickly Samrat. Yeah. 10 minutes. Yeah, 10 minutes. That's why I wanted to present first. Please. Don't squeeze Samrat to 10 minutes. Okay. क्या करना था इनका? Rijul, can you start? एक मिनट सम्राट। Oh, just one. वो जो proposal जो दिया था, you wanted to take it forward actually, no? You wanted to discuss, you wanted to convince us actually, no? तो मैंने बोला डॉक्टर बापत भी आज आएंगी, तो नहीं इनका if I whatever vaguely I remember, कुछ फाइबर दो पार्ट थे। एक पार्ट तो ठीक लग ही रहा था, और फाइबर वाली पार्ट। So he has a partner also. So the hempcrete part was not clear. Not clear. So now today we'll be concentrating on the hempcrete part. You want to make it clear. Yeah. So I wanted Dr. Bapat to also look into that. Yeah, Rijul, please start. Ask him not to take much after that one person. Yes, please. Rijul, can you start? बापत को थोड़ा सा मैं summary कर दूं। मैम ये दिस इज समथिंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर। आवर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का प्रोफेसर सम्राट मुखोपाध्याय इज हियर। तो लास्ट टाइम उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन दिया था हमारे इंटरनल ग्रुप का सामने, एंड वी थॉट दिस इज नॉट अ वेरी रेलेवेंट थिंग टू टेक अप एज वी टॉक अबाउट डिमांड ड्रिवन, बट सिंस वी आर नाउ एक्सपेंडिंग आवर हॉराइजन लिटिल बिट, तो ही आल्सो फेल्ट दैट मे बी वी शुड कंसीडर। तो मैंने बोला आज जब ऐसे डिस्कशन चल रही है, डॉक्टर बापत भी आएगी इसमें, तो आई थॉट नो इफ ही कैन क्विकली प्रेजेंट एंड वी कैन डिसाइड या ऐसा चीज एक्सप्लोरेटरी चीज वी शुड टेक इट और नॉट। या गो अहेड। या प्लीज, थैंक यू। Rijul, if you can start. Rijul, you are muted. Good afternoon, everyone. So I'm facing some technical snag. Can you see the presentation right now? Is it presenting? We can't see the presentation, Rijul. We are able to see the presenter. Okay. I'll share the presentation. You can share the screen with the full screen. Yeah. It's actually there was a power cut and I lost my Wi-Fi. That's why. Can one of my partners here present? Just the present. Tarun, can you present? Yeah. Now it is visible. Yeah. Yeah, please. All right.
Please see if you can do it concisely, 5-7 minutes, so that no, we can have another 5-7 minutes for discussion. Sure. So, Really sorry, Samrat, for waiting. हमारा तो मिसकैलकुलेशन हो गया 3 को बुलाने में. एक प्रेजेंटर 1 घंटा ले गए, हमको 5 मिनट बोला जा रहा है. This is not right, I guess. You are the internal people, you can take it. Visible, Raju? Yeah. Please start. Visual. all right. So our proposal here is about making hempcrete homes in the Himalayas. We start by talking about what does a typical middle class home in the Himalayan states look like today, and what are the materials being used. So let's go on to the next slide. I am on the next slide. Oh, the slide has not changed. The next one after this one. I think it's again some lag. Did it change? No, it did not change. No, it is not changed. Maybe you can just Ayush will have to change it. Ayush is presenting the PPT right now. Ayush, can you change it? I mean, it is changing on my system, but I don't know. I'm afraid it's not changing on the application, I think. Okay. So actually we did it on Google Meet, so it was very smooth. I don't know. So can you at least explain the Wait, concept? please brief let us. me Visual. try. Please explain this thing. What exactly do we want All to right. do the project? Yeah. What is the All right, need? I'm presenting again. Let me start this again. Sorry about that. Yeah. इसमें से दिखा Yeah, दीजिए. it's coming now. Yes. So this is what a typical house in the Himalayan states looks like these days. It is an RCC plus brick and mortar structure. And now most of this is not locally sourced. Most of this is brought up from the hills. So what is the problem here? The biggest problem here, can you move to the next slide, please? So the biggest problem with this kind of construction is that the embodied energy or the carbon footprint is extremely high, and this goes up because of the way these are produced and also the transportation. Thermal insulation is really poor as compared to what we are suggesting, and the cost of construction is much, much higher. Can we go to the next slide? So based on our preliminary research, we believe that if we introduce a hempcrete-based construction system, it could solve a lot of these problems, especially for rural communities that can grow their own hemp. And hemp, as you might be knowing, the use of industrial hemp has been legalized in Uttarakhand. It would be a very good cost saving on construction. They would save on cost of heating and cooling their buildings, and overall carbon footprint of the building would go down. Let's go to the next slide, please. What exactly is hempcrete? This. Yes, so now we come to what is hempcrete. So hempcrete is basically a building material which is made by combining hemp herds, which are basically the stalk of a hemp plant, chopped up stalk of a hemp plant, with a lime-based binder and water to create a mixture which is suitable for making walls if you use a shuttering system. And basically, the hemp stalk is actually a byproduct of the hemp seed oil and fiber industry, which is now coming up in Uttarakhand. Uttarakhand, because it is the first state to legalize industrial hemp, we will be generating a lot of this byproduct. And hemp plant is actually a plant that grows very easily in the hills, in places where it is very difficult to actually make any money out of agriculture. Hemp is a plant that grows without actually even growing it. It is, as you know, a weed, and it grows extensively. It will be found everywhere in the hills. And once it grows, once you sow the seed, after 4 months, it's ready to harvest. So it is abundantly available, and it really cuts down on the supply chain. So when we talk about
the binder basically consists of lime, tuna, some other admixtures and we combine these to create either walls by shutting or we can create bricks or panels with it. Now, as you know, Tarun has joined us. He has been researching upon this, about how to make a good hemp block, and he's made some inroads, some very interesting inroads. Can we move to the next slide? Now we talk about the properties of hempcrete. The strength of a hempcrete block is around 3.5 MPa. So it is an ideal material for a non-load bearing wall within a frame structure. Now, a frame structure, say an RCC frame structure, is a very common thing to be seen in the hills. That is because of the seismic requirements, because it's a high, there's a danger of earthquakes. So we need to have frame structures, and within those, the walls aren't really carrying any load. So we just need to have filler walls. And for this reason, hempcrete becomes a very, very apt material. Next, we'll talk about thermal conductivity. It is less than 0.15 watts per meter Kelvin. So if you compare it to bricks, let's go ahead. Okay, we can go to the Please next. tell us what is the next present slide. level of this technology in application. Present level. So we're somewhere around TRL 6 right now. We've been able to sort out the binder. We've been able to sort out the hemp herds and everything. We also have created the first initial prototypes, but we haven't made a complete structure yet. And that is basically why we've approached RUTAG at this point to help us with creating the first pilot structure using hempcrete. So the one reason why we have approached RUTAG also is because this could really have a huge impact in rural areas in terms of generating a source of income for people living up in the hills. A lot of times you would see that people have migrated out of these villages, but if they're able to, has it been used traditionally some way, in some crude way? Yes, sir, absolutely. I mean, there are actually historical evidences of hempcrete being used there was a study where hempcrete was unearthed from the Ellora caves also, where it was mixed with a clay plaster. Over here, up in the hills, it is mostly the fiber of the plant is basically used to make textiles, which help again in insulation and protecting the walls from the cold. European countries as well as the Australian continent, this has been widely used even in the 6th century BC. There are evidences that says in the Roman Empire the people used to use hemp as the material for building bridges. Okay, इसके साथ इस side look after this RUTAG activity here. You see your project we have heard from Samrat earlier in detail, and we are aware of the fact this is a very useful, but unfortunately, as Professor Gore was also mentioning earlier project as well, it is a demand-driven technology, so that's why I would like to say Dr. Bapot's comment. She is here from the funding agency side, because this appears to be exploratory projects as far as you have some technology, but still needs to be tested in order to take it to the field. But here, what projects we take is whatever is already in the field, people are using it. If people find it difficulty, we come to help them to improve the efficiency and effectiveness. So that's why we said to Samrat, we'll help you to formulate for DST, CSIR, other funding agencies. Please explore what are the funding agencies. Maybe we'll help you by connecting, writing the proposal, or maybe you providing our test facilities if it is all required. So I would like to see Dr. Bapot's comment here if she's still there. Yeah, I am very much there. See, two things can happen. That this kind of a technology, I guess it is a very important presentation what you have said, and a lot of possibilities for rural area job generation as well as carbon footprint reduction in those.
So, but I do not know that supposing for one, if I look at the circular kind of a thing, you know, complete closure of the cycle, then even though it is a very interesting thing, how, what is the situation in the Uttarakhand or any other areas where the hemp is being produced? How long it will be able to support? Supposing if your technique is so good that every house, suppose 10 houses, 100 houses, I would like to use this only. So whether as a demand supply chain or the thing will be equal, whether we will be able to support that. Otherwise, there is a problem. And another thing is, if you have got the technique well set, then we may like to take the help of the at the ground level who are the NGOs or somewhere, or through where somebody is really interested in using this and making, because you need to evaluate at the ground level also. Once the house or some other building or any small portion is constructed, you would like to evaluate that. So maybe if you have standardized the technique and the concerned all this effect at the lab level, if you are ready, and if the expert from this IIT Delhi or that CBRI or something, you know, that institution is there, CSIR's institution, who is actually expert in the building material. So if they have also certified or something else has already happened, then we can propagate first of all the awareness kind of a thing to the NGOs or something. Those who are interested, they can contact you, and it is a proper S&T kind of a work they can carry out, you know. So then I think that will be a more conclusive thing, and we will also would like to know how it is and all, and then we can work out further things. That is what my opinion. It is an interesting work, but any gaps are there, we need to put those things seriously. Thank you. I wish you wanted to say something, ma'am. They are the NGOs collaborating with IIT Delhi. I wish you please go ahead. What you wanted to say? Yeah, so thank you so much for your valuable comments. So, ma'am was talking about the demand supply and the thing. So, as a crop, we've been researching, and coincidentally, yesterday only I came back from the uptown villages. So the thing is, this crop is basically grows around in four months. So the entire crop ready to be harvested every 4 months. So that way, number one, it grows like wild. Number two, it grows really fast. Number three, processing is not a big problem because most of the machinery that is being used is very available machinery. Number three, the big point that we are trying to make here is while we are talking about a normal house that needs to be built up by anybody uphill areas. So most of the time we realize that the problem is transportation. So for example, a brick is available at 7 rupees in the plain areas such as Dehradun or Haridwar or Rishikesh. So taking that, somebody who wants to construct a house uphill, they have to come to Dehradun or Rishikesh and they have to buy it for 7 rupees, get it transported to a nearest location, and from there they have to do a mule to transport it to the place that needs to be constructed. So overall cost of the brick goes up by 70 rupees or something. So that way it becomes really easy for the people who want to construct these villages, to construct any house or a structure, number one. Number two, while ma'am was mentioning about the NGOs and all, ma'am, this is, I think, CBRI, Tarun is a researcher and he's working with CBRI. And at this point of time, we are looking out for help from the technical side, from IIT Delhi and RUTAG, so that together we will be able to consolidate. And also, since the government is also looking at some policy level investments in these kind of areas, so that way, even for the government, it becomes really easy for them to understand or draft a policy using similar kind of ventures. Number one. Number two, even for a sustainable housing or sustainable construction as a material, for the government, there are no many sources available. So this becomes, as in Uttarakhand is already up and running with a policy on hemp, industrial hemp. So if this comes up, and RUTAG and IIT Delhi being a part of it,
it becomes help even for the locals and people like us to push it to the government to allow us to use these kind of building materials. Okay, thank you. I think all of us heard it, and since our funding comes from PS's office, I'll request Dr. Bapat to think and probably let us know how we can take it forward, and then we'll request Samrat ji, who is the faculty from IIT, to make the modified in case we'd like to take it in a modified way. Let's stop here. Actually, I'll just request to show these two slides where you have done some prototypes. Can you just show these two slides? Rijul? Yeah, I'm just sharing the screen. So yes, right here. So this is basically a very simple masonry construction which is made using hempcrete blocks. Just one moment. Is my camera? I mean, am I visible? Is my video on? You are visible. Yeah. Okay, so I'll just show you the block. Just one moment, please. Yeah. Okay. Just 1 minute. Just 1 minute. We'll wind up. He is a researcher in IIT Roorkee. He is a PhD student in IIT Roorkee. Okay. Aman Jami. So CBA के collaboration में काम कर रहे हैं. So Arun, you'd have to switch off your background. Yeah. Okay. So can we go to the next slide? Yeah. Just next slide, and we wind up in 1 minute. Yeah. The alternatives is basically this, where we basically have wooden shuttering or bamboo shuttering or whatever local material is available, and then fill the hempcrete mix within it. It can also become part of the final structure, or it could also be removed to expose the hempcrete material inside. Okay, so I think I'm really sorry. We have another group is waiting, and I didn't give enough time. But, we understood. Yeah. Dr. Bapat, think and let us know later how she wants it to take it forward. Okay. We will. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. You waited for so long, but finally we have understood and made the presentation in front of our PS's office. Thank you very much, all of you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Ma'am, we'll take the vermicomposting part because for many months, we have been debating on that. I think we could make both of you present today. So, and I think we got officer from Bikaner as well. So let's take it forward in next 20 minutes maybe. Fiber dispersion. कहाँ से शुरू करोगे? वो बताओ, राजकुमार. Just give me only 1 minute. I'll just have to tell someone and come back in just 2 minutes. But you please continue. Just come, please. Yeah, please come back. थोड़ा सा मैं when the man comes back, कोई बाहर गई है. तब तक मैं तो समझ ही दे देता हूँ. इस बीच में लास्ट मीटिंग के बाद क्या हुई है? तो लास्ट मीटिंग के बाद मैं हैड स्पोकन टू राजकुमार again कि तुम वो प्रपोजल को क्या आगे कर ले. Then he mentioned about कल्पना जो पॉइंट जो था ना जो नहीं चल रहा. Then she said that Rajkumar should talk to the officer in Bikaner. उन्होंने कुछ काम कर रखी थी. So then he has spoken to that. वो वाला then he spoke. So he spoke to it, and then ma'am said that maybe let him be invited today. तो इसलिए उनको भी invite किया. Mr. Lega from Ecosphere ने क्या किया? बीकानेर एक जहाँ पे हम गए थे ना. तुम बताओ क्या बताओगे इसमें आप? हाँ, इसमें एक्चुअली में सर ये बहुत दो सेंटेंस में क्या हमको बताओगे अभी? बताएंगे सर कि नया डिजाइन है. नया डिजाइन में हमने क्या क्या किया है और उनसे कुछ इनपुट लेना है. जो डॉक्टर लेगा है ऑलरेडी कुछ एक बनाया था ड्रम टाइप में स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट नोट में दिया था. अच्छा, और वो श्राइन वालों से कुछ नहीं मिल रहा? उनसे कुछ बात नहीं हो रही. कुछ नहीं हो रहा. तो ये श्राइन के लिए नहीं है? नहीं, अभी नहीं. अभी क्या है? I think I request Dr. Bapat to share what her views are, what the direction she wants us to take. I think that's ball be in her court, and the way she. हाँ, ball be in her court, लेकिन she can't also. नहीं, then you can give the comments. Take us for a ride also. नहीं, you can give the comments. अब जैसे वो उसके बाद you can give the comments. इसको थोड़ा सा दिखाओ अभी प्रेजेंटेशन में. मैम आपके वक्त हम बात शुरू करेंगे ना. जैसे लास्ट टाइम इसको बंद करो अभी. दिखाओ who are in the participants.
मैं मानती शुरू करें। हाँ नमस्कार डॉक्टर लेगा। I'm really sorry, Mr. Saha, you cannot see me. I'm just sitting a little far. Okay. So we have four, five of faculty members who are involved with RUTAC. They are here. So ma'am has come back. So ma'am, actually this vertical composting and the vermicomposting have been discussed again and again. And there is strong observation by our RUTAC side. तो मैंने सोचा वो आपको सामने भी हम खड़ा करूँ. But let us hear you first. That what kind of future directions you want to take in this direction, and then we'll give our views, including Professor Gore. Please give your direction first. Yeah, I would also rely with Dr. Legha first, because see this vermicomposting and vertical vermicomposting, now actually we started when the mule dung was a problem. And where the our Jammu Katra area, there is a land issue is there, so that vertical would be of some use. That was the idea, and that is what we have taken. But now when we are seeing a lot of PMST Act, that is Prime Minister Science and Technology Innovation Council, where the one of the mission is Waste to Wealth is the mission. So here, even though we have started with mule dung, but this is a lot of potential is there in say bigger complexes, societies, or wherever it is. So there the vertical kind of a thing and the robust thing will also have some good options to reach out to the people for decomposing the waste and the so treating the waste in a proper manner. So that is what is the added potential to that. And if this kind of a thing approved by Dr. Legha or the expert in vermicomposting or those people, then where all we can use it, so that we can actually multiply it through the panchayat also, because we PSA office has very good outreach in other interministerial collaborations and other things. So it will have a lot of potential for this technology even otherwise. And since IIT Delhi is proposing that it can be also developed by the local people or so also that is another aspect. So in those lines we have, I think IIT Delhi RUTAC Center has designed something, but I would request you all the experts to put their comments, so that how best as a product we can develop, whether it will have the potential and elsewhere also, because finally you are decomposing the waste. So supposing for mule dung the your earthworms are required, but for any other waste where the cow dung or some other things are there, or any other composting thing, we can as well have the consortium of microorganisms, or the methodologies could be different. So how best you think, because I am not the expert of the compost or something, but I would request Dr. Legha whether they have gone through all these things, and where the IIT people or the Rajkumar and their team, whether they have looked at all the aspects of how the gas is generated, or the exchange of the gases, the humidity and all other factors while designing the thing. So I would like to hear from you. Over. Good afternoon, madam. I have gone through this design provided by Mr. Rajkumar ji. This design is fine, and almost every aspect they have covered. And in this design, I didn't find any fault, and most of the aspects they have covered, and it is very good design, I think, and it will be applicable not only for mule or equine dung. It will work for cow dung, any other waste, and even vegetable waste. This can be utilized. This type of design, even this type of design, not on hills, in posh areas, metros, that is what, yeah, lawns, parks, hotels. This type of design, guest houses, this type of design can be utilized. Yeah, so that is very good feedback. So let me congratulate IIT Delhi's team also. Something add on you would like to say, I would request that also. And
Yeah, that is all we can say. And any other this kind of a vertical thing, whether you have seen in the market as a product or something, or any other interesting comparative product is been seen by anybody? आपके पूछा मैडम मैंने तो नहीं देखा अभी इस तरह का वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इस तरह का तो ये बढ़िया होगा. Then my another suggestion would be कि this could be then prototype अगर हम लोग डेवलप कर लेते हैं ज्यादा खर्चा तो what is the estimated cost राजकुमार? What would be the estimated cost for your design product? अभी इसका मैम एक रफ एस्टिमेट मैन्युफैक्चरर ने दिया है 1,10,000 के आसपास. लेकिन अभी ये उसको बुलाया है, वो आएंगे 3 बजे के आसपास, तो उनसे डिस्कस करेंगे अभी. लेकिन हमारा कॉस्ट 50,000 के अंदर अंदर होगा. चले 1 लाख लेके चलते, 50 to 1 लाख का बीच में होगा. 50 to 1 लाख का बीच में होंगे तो अच्छा. तो हमारे को ये भी एक देखना पड़ेगा कि यू नो एंड हाउ मच इट विल कैटर टू, कितना उसका लोड कितना ले सकता है वेस्ट का. टोटल 900 केजी है सर ये इस यूनिट के लिए. मैं आउटपुट कितना निकालेगा उसको तो बताओ. 900 केजी कोडंग देंगे उसके अंदर, तो वो 60% उसका ये होता है. तो 500-600 केजी के आसपास में. नहीं 900 केजी इज इम्पोर्टेंट. जो जितना वेस्ट आप कंज्यूम करोगे 900 किलो वेस्ट. 900 तो बहुत बढ़िया है. सो कैन यू आल्सो थिंक अबाउट द डाउन साइजिंग इट फॉर अदर यूजेस. दिस इज तो आपने बड़ा बना दिया था बिकॉज इट वाज रिक्वायर्ड लाइक दैट. सो क्या ये डाउन साइज करके भी सिमिलर वे से हो सकता है? यस मैम. आई थिंक द करेक्ट स्ट्रेटजी वुड बी कि जो प्रोटोटाइप हमने बनाया है उसको आईआईटी में हम प्रॉपर्ली टेस्ट कर लें और उसकी जो लॉजिस्टिक्स है उसका कैसे लोड करेंगे, कैसे निकालेंगे, वाटर का क्या होगा, कोरोजन का क्या होगा, ये सारी चीजें हम कर लेते हैं. उसके बाद में जैसे मैडम ने सिखाया है, जैसे मैडम केटकी बोल रही हैं, then we would definitely locate the plausible applicational venues for this. वो संभव है और उसी के अनुसार स्केल भी बड़ा घटा कर सकते हैं. तो मैडम ऐसा करते हैं. Yeah, I think I would request if Dr. Lega is ready to evaluate at their premises also, whether we can make then 2 prototypes, and this is the Equine National Equine Research Institutions, so they also can evaluate and it will be both parallel can happen. Because इसमें दोनों की फायदा हो जाएगा. बताइए डॉक्टर लेगा. अगर मैडम हमें ये प्रोवाइड कर दो, हम इवैल्यूएट कर देंगे इसको. हमें वर्मी कंपोस्ट को प्रैक्टिकली करके देख लेंगे इसमें, अगर एक यूनिट हमें मिल जाएगी तो. या एंड ये प्रोटोटाइप आई थिंक वी शुड गो अहेड. आप एक बार फिर देख लीजिए राजकुमार, आप भी एक बार देख लो कि वो जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस या उसका प्रॉपरली सेफ्टी वगैरह जो भी और की भी कुछ हो सकता है, प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा. एंड देन मेरे ख्याल से ये प्रोटोटाइप करने में कोई हर्जी तो है नहीं, बिकॉज आप ना एंड पहले हम लोग हॉर्स के लिए ही कर सकते हैं. Because I think as Dr. Professor Gaur said, it is completely understandable. क्योंकि अगर कोई पिकनिक स्पॉट पे या कोई टूरिस्ट प्लेस पे करेंगे तो बहुत छोटा करके भी कुछ फायदा नहीं है. They can bring everything and then put it together. And फिर ये हो सकता है. And ये अगर आप 900 जब ये कंपोस्ट बनाएंगे तभी भी उसका एक टेस्ट करके सर्टिफाई करके उसका और भी आमदनी रह सकता है. सो मे बी राजकुमार या विथ द हेल्प ऑफ डॉक्टर लेगा मोटा मोटी उसका कितना ये आगे जनरेशन हो सकता है इनकम या समथिंग लाइक दैट, रफली कैन वी जस्ट एस्टिमेट सो दैट पीपल विल गेट एंथुज्ड अबाउट इट. दे मे नॉट थिंक कि बाबा ये ऐसे ऐसे हो सकता है करके. थैंक यू मैडम फॉर योर इनपुट्स. हम बंद करें अभी और क्या मीटिंग बंद करें? हो गया कुछ नहीं मेरे ख्याल से नहीं है. आई विल अगेन डॉक्टर लेगा से ही हम लोग इनपुट ले सकते हैं बिकॉज दे हैव वर्कड विथ लॉट ऑफ कंपोस्टिंग टेक्निक्स आल्सो एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डंग्स आल्सो. सो देयर इंस्टीट्यूट एंड हिज एक्सपर्टीज इज हैंडी. आई विल आल्सो विल हैव सेपरेट पार्ट विद डॉक्टर एंड इसको लेंगे कल्पना
मिलेंगे साथ। ठीक है देन आप या आई थिंक या थैंक यू डॉक्टर लेखा। Thank you, madam. Thank you. थैंक यू मिलेगा। Thank you. ओके बात में इसको साथ डिस्कस कर लीजिए। क्या लेगा? आपको पता? ओके Okay, sir. Okay, madam. Thank you. ओके थैंक यू बाय बाय Thank you. थैंक यू।